Over to you. Good afternoon. Today's RDLS topic is HIV-TB co-infection in children. And today our speaker is Dr. Shomjit Jana. He has done his MBBS from MCH Kolkata and MD from SET GS College, Mumbai. Currently, he is working as a senior resident in the Department of Pediatric Medicine at Medical College Hospital, Kolkata. He has many publications under his name. Now, I will ask Dr. Shomjit sir to enlighten us on today's topic. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. So, is it audible? Yes, sir. Okay. So, today's topic is HIV and TB co-infection in children. Shall I proceed? Hello. Yes, sir. Go to the Okay. next. Okay. So after these sessions will over, the main objectives that should be covered in this session are: we should be able to understand the dynamics of HIV-TB co-infection in children. We should also know the TB screening protocol to be followed in ART center. We should learn the revised diagnostic algorithm of TB in children living with HIV, and we should also learn the approach of different types of tuberculosis in children living with HIV, and we should be able to prescribe daily anti-TB treatment regimens in children living with HIV in ART centers, and also learn the ART regimens to be prescribed in children living with HIV with TB co-infections. So after the end of these sessions, we should be able to diagnose or prescribe or learn the various things that are given in this session. So first of all, there is a previously there was RNTCP, that is Revised National Tuberculosis Elimination Program. So it has been changed to NTEP, that is National Tuberculosis Elimination Program. So in this change, what are the new aspirations? So the new aspirations are that we have to eliminate TB by 2025. So to eliminate TB by 2025, what things need to be done? We should be able to make our diagnosis of TB more efficient. So to make the diagnosis of TB more efficient, what should be done? We should be able to microbiologically diagnose TB rather than only clinically or radiologically. We should be able to rapid detection of rifampicin and isoniazid resistance, and we should be able to do rapid molecular tests that will make it easier and better to as compared to the past previous methods of diagnosis TB. So before starting to the main topic, let us see the global burden of TB in the world and in our country. So in 2018, it witnessed an estimated 10 million new cases of TB globally, out of which the 8.6% were people living with HIV. More than 50% were there in the South African countries, and 11 and among these the 11% were children, that is less than 15 years. Out of this, there was estimated 1.6 million deaths, of which 1.2 million were HIV negative and rest were HIV positive. So, and additional 251,000 deaths from TB among with HIV positive. So from here we can see that around 250,000 deaths were TB HIV positive and who were concurrently affected with TB. So globally, the 57% of the cases were among men, and in children, the male and female ratio are close to 1. So two-thirds of the burden of this TB in HIV were mainly in the following 8 countries. So now in this map, we can see there is a huge detection gap in children under 5 in our subcontinent, according to the Global TB report of 2019. So what is the reason of this large case detection gap? So we can see that and most of the case detection gap is in the age group of less than 5 years. So what is the reason of this large case detection gap? So we will see in the subsequent slides. So less than 5 years, it is 69% TB reporting gap. In the 5 to 14 years, it is 40%, and in the above 15 years, it is 35%. In the left hand side also, we can see there is in the lower age group, there is less TB incidence due to less TB reporting, and that is due to less TB detection. So less TB detection is the main reason of this main
problem. So what are the in this slide also we can see there in the age group of 0 to 4 years there is very less case detection among male and the female children, and that is due to some problems. So what are the problems that is leading to the less case detection gap? So we can classify into symptom wise problems. In the next slide there are radiological problems and microbiological test problems. So in the symptom wise problem, what are the main problems? So the chronic pulmonary symptoms due to HIV related conditions, that is lymphocytic interstitial pneumonia, bronchiectasis, etc., that can mimic TB. So these symptoms are seen in HIV patients also and can be seen in TB patients also. So other symptoms like weight loss, failure to thrive are also common symptoms of HIV and TB also. And as the HIV disease progresses and the individual becomes more immunocompromised, the clinical presentation is proportionally more likely to be extrapulmonary or smear negative than in HIV uninfected patients. This also leads to misdiagnosis or delay in the diagnosis. So these three are the main reasons of overlapping symptoms between HIV and TB, which leads to lower case detection. So in this slide, we can see the radiological problems. Here we can see the chest X-ray interpretation, which is difficult in the presence of HIV-related conditions such as pneumonia and bronchiectasis. Because as I have told earlier, the similar presentations are there in HIV also. So the interpretation, there is a overlap. And the next is the in HIV infected patients with active TB proven on sputum culture can have seemingly normal chest radiograph. This also I have told earlier that the HIV infected patients with TB, they may have normal chest radiograph, but in the background they are having active TB. Now in the microbiological test, what are the problems? There is the sputum microscopy has a poor sensitivity in detecting TB in children living with HIV due to fewer organisms in the sputum. And the NAT, that is CB-NAT, is the frontline test for the diagnosis of TB among children living with HIV. But if the CB-NAT is not available, the arrangement has to be made to collect and transport the specimen to the nearest CB-NAT or MGIT culture site. So the collection of the sample and transporting the sample to the remote areas is a big problem. So these three overlapping symptoms, radiological and microbiological tests, these are the main problems in the case detection gap in children less than 5 years of age. So to summarize, where do you miss the children with TB? Here are the main reasons. That is often underdiagnosed and underreported due to lack of simple sensitive point of care tests like sputum smear for adult. So this is telling that in the adult there is a simple test, that is sputum smear, to diagnose the TB, but in children this simple test is lacking. So we are mainly dependent on the CBNet, which is also not available in the remote areas. The TB control strategy not well equipped for diagnosis of TB among children. So the main NTEP program was organized in keeping in mind the adult cases, but this adult program is being extrapolated to the childhood program. So the everything arrangement has been done in keeping in mind the adult cases. So childhood TB actions thus often need to retrofit into the mold actually set for adult. That currently what I have told. And the difference in the disease and its diagnosis among adult and children creates a divide, that is bacteriological, radiological, and radiological to bacteriological. So there is, so the main thing is that it is an adult related program that has been extrapolated to the childhood program. So there is a difference in diagnosis by bacteriological, radiological, and symptomatic. So so what we have seen, I am repeating. सो अभी हमने जो देखा ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसमें हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक टीबी को हम इंडिया से एलिमिनेट करेंगे. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कौन सा चीज़ को ज़्यादा
अच्छा बनाना पड़ेगा वो है डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। सो डायग्नोसिस को हम जितना अच्छा बनाएंगे उतना केस डिटेक्शन ज़्यादा होगा और उससे उतना हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है। एक तो है माइक्रोबायोलॉजिकली हमें उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि हमें रिफाम्पिसिन एंड आयनाइज रेजिस्टेंस जो है उसको रैपिडली डिटेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा बेटर मेथड से दैट इज सीबीनेट। एंड रैपिड एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट जो जितना इजीली एंड बेटर जो कि सीबीनेट है, उससे हम जितना ज़्यादा केस डिटेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डिटेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ेगा और उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। सो यही है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। सो इसमें हम देखते हैं कि कितना मेन टीबी का बर्डन है इन द वर्ल्ड में कितना टीबी का बर्डन है। तो उसमें हम जो देखने में मिलता है कि 10 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी है पूरा वर्ल्ड में, उसमें से 8.6% है HIV के टीबी विथ HIV एंड उसमें से 11% है चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स। और जितना चिल्ड्रन और एडल्ट अफेक्टेड है उसमें से 1.6 मिलियन डेथ टोटल है और 0.4 मिलियन डेथ ड्यू टू HIV है। सो 57% केसेस है मेन के अंदर एंड चिल्ड्रन में मेल इज टू फीमेल रेशियो सेम है। सो ये स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमारा जो केस डिटेक्शन है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा केस डिटेक्शन गैप है। तो मेनली उसका जो परसेंटेज है लेस देन 5 ईयर्स में 69% है, 5 to 14 ईयर्स में 40% है एंड मोर देन 15 ईयर्स में 35% है। तो ये इतना ज़्यादा केस डिटेक्शन गैप का कारण क्या है? तो कारण में हम मोस्टली देखते हैं आइदर सिम्टम के कारण डिटेक्शन गैप ज़्यादा है, आइदर रेडियोलॉजिकल फीचर्स के प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा है या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के कारण ज़्यादा है। तो हम एक के बाद एक देखते हैं सिम्टम में क्या प्रॉब्लम है। जो सिम्टम जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकिएक्टिसिस ये सब HIV में देखा जाता है, वो सिमिलर सिम्टम टीबी में भी देखा जाता है। तो इसलिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये HIV के लिए है या टीबी के लिए है। दूसरा सिम्टम जो है वेट लॉस एंड फेलियर टू थ्राइव, वो भी HIV टीबी दोनों में ही मिलता है। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग से हो रहा है या पहले से ही HIV के लिए है वो बोलना मुश्किल हो जाता है। एंड जितना HIV डिजीज प्रोग्रेस करता है तो बच्चा उतना ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जो क्लिनिकल टीबी का फीचर्स है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जैसे लंग छोड़ के बाकी जगह में जो टीबी होता है, जैसे लिम्फ नोड टीबी, एब्डोमिनल टीबी, स्पाइन टीबी, ये सब फीचर ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो स्मीयर हम करते हैं स्पूटम स्मीयर टीबी के लिए, वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से केस डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड रेडियोलॉजिकली हमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो सिम्टम वाइज हो रहा था सेम है। चेस्ट एक्सरे में भी जो न्यूमोनिया या ब्रोंकिएक्टिसिस देखने को मिलता है वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये HIV के लिए है या टीबी के लिए है। एंड बहुत सारे बच्चों में क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज़्यादा होने को लगता है, तो इसलिए HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में चेस्ट एक्सरे बहुत बार नॉर्मल आता है। एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो स्पूटम माइक्रोस्कोपी हम करते हैं बच्चों के लिए, तो वो उसका सेंसिटिविटी बहुत ही पुअर है। तो इसलिए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं हमें मिलता। एंड जो सीबीनेट टेस्ट है बच्चों के लिए, जो हमारा फर्स्ट लाइन है टू डायग्नोस टीबी, वो कभी कभी रिमोट एरियाज में नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसको कलेक्ट करके दूर भेजना पड़ता है। तो वो ट्रांसपोर्ट और कलेक्शन में बहुत सारा तकलीफ होता है। तो ये मेनली 3 चीज़ों के वजह से हमें बच्चों में केस डिटेक्शन गैप बहुत कम देखने को मिल रहा है। सो इसमें भी वही सेम चीज़ ही है कि केस डिटेक्शन गैप ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो टेस्ट है तो वो उतना सिंपल नहीं है। जैसे एडल्ट में सिंपल स्पूटम से ही हमारा डायग्नोसिस होता है, बच्चों में सीबीनेट मेनली किया जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो उतना इजी नहीं है। और बाकी जो चीज़ है कि ये जो मेन जो टीबी का प्रोग्राम बनाया गया था एलिमिनेशन का, तो वो मेनली एडल्ट का
को माइंड में रख के बनाया गया था, लेकिन वही प्रोग्राम को जब हम बच्चों में भी लागू कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ ठीक से फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली, सिम्टोमेटिकली जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। So what are the risk of TB in children living with HIV? So HIV positive children are at increased risk of developing TB. So TB in children living with HIV is often more severe, progressive, and likely to occur in extrapulmonary sites. The rates of drug-resistant TB tends to be higher in children living with HIV. The recurrent disease and relapse occur more frequently in children living with HIV. The mortality of TB is high, especially as the CD4 count decreases. So जो क्या क्या रिस्क है टीबी का इन चिल्ड्रन लिविंग विथ HIV? सो HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन में टीबी का रिस्क नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, और जो टीबी होता है HIV चाइल्ड में, उसमें वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स मतलब लंग छोड़ के दूसरे जगह में होने का ज़्यादा चांस रहता है। और HIV में जो टीबी होता है उसमें ड्रग रेजिस्टेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, एंड जो टीबी है वो रेकरेंट मतलब बार बार होने का, और रिलैप्स होने का मतलब एक बार ठीक होके फिर से वापस होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड जैसे जैसे CD4 काउंट कम होने को आता है उसमें टीबी का मोर्टेलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। So here we are seeing the HIV and TB interaction, because as the number of TB children increases in HIV, so what is the main pathophysiology behind this interaction? So we can see that the due to worsening of immunosuppression in children living with HIV, there is decreased amount of interferon gamma and Th1 lymphocyte, which is leading to more Mycobacterium tuberculosis as a clinical disease. This tuberculosis is releasing the interleukin 1 and TNF alpha, which is also increasing the viral replication and giving rise to AIDS. So this is the cycle that HIV is giving rise to TB and TB is giving rise to HIV. So both the things are predisposing one is to other. So in the left hand side you can see that TB accelerates HIV disease progression by higher immune activation, increases HIV replication, AIDS defining illness, and AIDS is paving way for clinical TB and mycobacterial TB dissemination. So इधर हम देखते हैं कि टीबी और HIV के अंदर क्या इंटरेक्शन है जिससे HIV से टीबी बनता है, मतलब टीबी होने का ज़्यादा चांस होता है, और टीबी इन्फेक्टेड बच्चों में HIV होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जितना इम्यूनो सप्रेशन होता है चिल्ड्रन लिविंग विथ HIV में, उतना ज़्यादा इंटरफेरॉन गामा एंड Th1 लिम्फोसाइट डिक्रीज होता है। तो जितना इंटरफेरॉन गामा एंड Th1 लिम्फोसाइट डिक्रीज होगा, उतना क्लिनिकल माइकोबैक्टीरियम टीबी होने का चांस बढ़ जाता है। तो फिर एक बार टीबी हो गया उसके बाद क्या होता है, मैक्रोफेज साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है जो इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF होता है। तो उससे क्या होता है, वायरल रेप्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है और एड्स होता है। सो इधर हम देख पाते हैं कि एड्स HIV होने से टीबी का चांस बढ़ रहा है, फिर टीबी होने से HIV का चांस बढ़ रहा है। सो दिस इज ए विशियस साइकिल। So how do you diagnose TB in an infected child? So symptomatic screening for TB should be routine for all HIV infected children, including upon HIV diagnosis and commencement of ART. So the approach of diagnosis of TB, that is pulmonary and extrapulmonary TB, is similar in the HIV infected child as for the HIV uninfected child. The diagnostic challenges are greater because co-infection with HIV reduces the specificity of typical and clinical and radiological features of TB. The chronic or persistent lung disease is common in HIV infected children because of other opportunistic infection and HIV infection itself. सो हम कब टीबी को डायग्नोसिस करेंगे इन चिल्ड्रन लिविंग विथ HIV? सो इधर हम देख रहे हैं कि जब भी बच्चा सिम्टोमेटिक होगा टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट में,
तो तभी हमको टीबी का डायग्नोसिस करना चाहिए बाई वेरियस मेथड्स। और जो मेन टीबी का डायग्नोसिस हम करते हैं जो पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में नॉर्मल बच्चों में, वैसा ही सेम अप्रोच हम एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में भी सेम अप्रोच ही करेंगे। और डायग्नोस्टिक करने में एक चैलेंज ज़्यादा होता है क्योंकि जो एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है उसमें टीबी मिलने का चांस थोड़ा घट जाता है क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एंड परसिस्टेंट एंड क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन जो एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में बढ़ जाता है, जो टीबी के जैसा ही दिखता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो मेन चीज़ है जो हमारा 4S सिम्टम्स है जो बाद में आएगा, तो जैसे ही हमारा सिम्टम पॉजिटिव होता है, स्क्रीनिंग सिम्टम पॉजिटिव होता है, तो हमें टीबी का डायग्नोसिस चालू कर देना चाहिए। So diagnosis. So what are the recommended approach to diagnose TB in children living with HIV? First of all, there should be a careful history. Second, there should be a clinical examination. Third, there should be a bacteriological confirmation wherever it is possible, and then there should be radiological investigation, and there should be investigation relevant to suspected pulmonary and extrapulmonary TB. So हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए टू डायग्नोस टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए? पहला तो हमें ठीक से एक बार हिस्ट्री लेना पड़ेगा, जो मेन जो 4 सिम्टम होता है वो पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें उसका ठीक से एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। थर्ड, एग्जामिनेशन करने के बाद जो बैक्टीरियोलॉजिकल कॉन्फर्मेशन है जो स्मीयर से और सीबीनेट से हम करते हैं वो करना पड़ेगा। फिर हमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। एंड ये छोड़ के बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है जैसे बायोप्सी वगैरह जो हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में करते हैं, बायोप्सी, एफएनएसी, ये सब भी हमें करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे ही अप्रोच में चलना पड़ेगा। So what are the 4S symptom complex for TB screening in children living with HIV? So there is a difference between the 4S symptom complex among adult and children. So in adult, what are the symptoms? That is current cough, fever, weight loss, and night sweat. But in children, there is no night sweat. There is current cough, fever. There is poor weight gain and contact with a TB case. So if there is this is the difference between adult and children. If there is a contact with a TB case, we should screen the child for TB in children living with HIV. So हमें इधर 4 सिम्टम क्या क्या देखने को मिल रहा है? एडल्ट में है कफ, करंट कफ, नॉट प्रीवियस कफ, अभी जो कफ हो रहा है। नेक्स्ट फीवर, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट। लेकिन चिल्ड्रन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? करंट कफ, फीवर, पुअर वेट गेन एंड कॉन्टैक्ट विथ टीबी केस। सो टीबी के कोई भी टीबी केस के साथ अगर कॉन्टैक्ट होता है, वो घर में भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, बाहर में भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो हमें उसमें बच्चे को स्क्रीन करना चाहिए। So this is the intensive case finding protocol in children living with HIV. Any children more than 12 months of age with HIV, we have to screen for these 4 symptoms. If the symptom is if there is presence of any of the 4 symptoms, that is yes, we have to investigate for TB and other diseases. And after investigation, if you are getting TB, then you have to treat for the TB. If you are not getting TB, then you have to follow up and consider the isoniazid prophylaxis therapy. And if there is other diagnosis, we have to give appropriate treatment and consider isoniazid prophylaxis therapy. And if any of the 4 symptoms are absent, then also we have to start the IPT, that is isoniazid prophylaxis therapy, if there is no contraindication for it. And after that, we have to regularly screen for TB. सो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोई भी बच्चा अगर 1 साल से ऊपर हो एंड उस HIV इन्फेक्टेड है, तो उसमें हमें ये 4 सिम्टम देखना पड़ेगा। 4 में से कोई भी एक सिम्टम अगर पॉजिटिव है, तो हमें टीबी के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर टीबी हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन में टीबी पॉजिटिव होता है, तो हमें उसको टीबी के लिए ट्रीट करना पड़ेगा। अगर टीबी पॉजिटिव नहीं होता है, तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, उसके साथ साथ IPT भी चालू करना पड़ेगा। एंड अगर कोई अलग डायग्नोसिस है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एंड उसके साथ IPT चालू करना पड़ेगा। लेकिन अगर चारों में से कोई भी सिम्टम पॉजिटिव नहीं है, तो हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ
आईपीडी चालू करेंगे अगर उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। So, what are the manifestations of TB in relation to HIV immunosuppression in early phase and late phase? So, we are always dividing on the basis of clinical, then microbiological or smear related result and chest X-ray. So, in the early phase, the clinical presentation is often like the post-primary TB, that is adult type, but in the late phase, it often resembles the primary TB. In the sputum smear result, in the early phase of immunosuppression, it is often positive, and in the late phase of the immunosuppression, it is often negative. And in the chest X-ray also, in the early phase, we often see the cavities, but in the late phase, there is atypical presentation, often infiltrates and mid and lower lung field lesions, intrathoracic lymph nodes, and infrequent cavities. So, here the main differences we are seeing that in the sputum smear, if you are diagnosing in the early phase, it is often positive, but in the late phase, it is often negative. And the chest X-ray also, in the early phase, the cavitations may be seen, but in the late phase, the cavitations may not be seen. And other than that, there can be atypical presentations, and often uh, infiltrative lung lesions may also be there. So इसमें हम टीबी का सिम्टम वाइज, स्मीयर वाइज एंड एक्सरे वाइज टीबी का अर्ली फेज एंड लेट फेज में क्या डिफरेंस मिलता है वो हम देख रहे हैं। तो अर्ली फेज में क्या होता है, क्लिनिकली हमें पोस्ट प्राइमरी टीबी जैसे एडल्ट टाइप देखने को मिलता है क्लिनिकल सिम्टम, एंड इन द लेट फेज इसको प्राइमरी टीबी जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। मेन जो डिफरेंस होता है स्मीयर में, जो इनिशियल फेज में पॉजिटिव आता है, लेकिन लेट फेज में अक्सर क्या होता है, स्पुटम स्मीयर नेगेटिव होता है, जिसके लिए डायग्नोसिस करने में दिक्कत होता है। चेस्ट एक्सरे में भी शुरू के फेज में कभी कभी कैविटी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम कैविटी देखने को मिलता है, लेकिन लेट फेज में क्या होता है, चेस्ट एक्सरे में कोई भी कैविटी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है और एटिपिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है, जिसके कारण जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, डायग्नोसिस में थोड़ा दिक्कत होता है। So, what are the features of HIV and TB? So, HIV and TB co-infection occurs in 50% of the children. With HIV disease, atypical features are common. The extrapulmonary and miliary TB are common among younger children. The clinical features in children are in the pulmonary TB, there is cough, fever, failure to thrive, weight loss or poor weight gain, and history of TB contact to be taken. And what are the sites for extrapulmonary TB? There is lymph node, CNS TB, bone TB, TB of the serosal layers, that is pleura, pericardium and peritoneal, and disseminated TB. So इसमें हमें HIV और TB में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है? तो पहला चीज है कि HIV TB को इन्फेक्शन 50% चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और HIV डिजीज के साथ एटिपिकल फीचर ज्यादा कॉमन है। The extrapulmonary and miliary TB are more common in younger children. The extrapulmonary and miliary TB younger children में ज़्यादा कॉमन है, और क्लिनिकल फीचर में पल्मोनरी टीबी में हमें जो 4 सिम्टम मैंने बोला था, वही 4 सिम्टम ही देखने को मिलता है, जैसे फीवर, कफ, फेलियर टू थ्राइव, वेट लॉस, एंड कोई भी पल्मोनरी टीबी के बच्चों में हमें हिस्ट्री ऑफ टीबी कॉन्टैक्ट लेना ही पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कौन कौन सा साइट इन्वॉल्व होता है? एक है लिम्फ नोड, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन, देन बोन, देन सेरोसल लेयर्स दैट इज प्लूरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम, एंड डिसेमिनेटेड टीबी। So this is the diagnostic approach of TB in children living with HIV. So so these two are the similar slides, so I'm reading out this one. So diagnostic algorithm of TB in children living with HIV, it is both for pulmonary and extrapulmonary TB. So any children who is HIV infected, just like I have told before, should undergo 4S TB screening. And in the 4S TB screening, if any one of the symptom is present, we are
we are labeling the child as presumptive TB case, and after that we have to clinically evaluate the child carefully. And the presumptive TB case, which we are presumpting on the basis of clinical symptom, has to undergo microbiological test by CBNet or two sputum smear, and along with that chest X-ray. So if the sputum smear or CBNet is positive, we are labeling the child as microbiologically confirmed TB. If the sputum smear is or CBNet is negative but the chest X-ray is positive, then we are labeling it as clinically diagnosed TB. And if both are negative, it is no TB. And after the clinical evaluation, if there is presumptive extrapulmonary TB, that is the clinical features of lung involvement is not there, but extrapulmonary involvement is there, like altered sensorium, any lymph node enlargement or abdominal pain, etc. So extrapulmonary symptoms are present, then we have to also do the same algorithm like CBNet or smear from the sputum, and if or any culture test from the extrapulmonary site like lymph node or any other site. If it is positive, then it is also suggestive of extrapulmonary TB. If the sputum smear or CBNet or culture is not possible, we can directly go for cytohistological pathological examination, that is biopsy. If it is the biopsy is suggestive, then also we can label it as extrapulmonary TB. And if both are not possible, if we are getting a chest X-ray which is giving a picture of TB, then also we can label it as extrapulmonary TB. सो इधर यहाँ पे डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम में हमको क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी बच्चा अगर HIV से इन्फेक्टेड है तो उसको हम 4S TB स्क्रीनिंग करते हैं। जो हमने 4 सिम्टम बोला था, वो 4 सिम्टम का स्क्रीनिंग करेंगे। अगर 4 सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम पॉजिटिव है तो हम उसको प्रिजम्पटिव TB केस कहते हैं। और अगर कोई प्रिजम्पटिव TB केस है तो और हमें क्लिनिकल जैसे हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो पल्मोनरी टीबी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। अगर पल्मोनरी टीबी हो हमें दिख रहा है, मतलब सिम्टम वाइज एग्जामिनेशन वाइज, तो हमें सीबीनेट या फिर 2 स्पुटम स्मीयर एंड चेस्ट एक्सरे ये सब टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें से अगर सीबीनेट या स्पुटम स्मीयर या कल्चर कोई भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी बोलेंगे। अगर सीबीनेट नेगेटिव है लेकिन चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव है तो हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस्ड टीबी बोलेंगे। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो हम उसको नो टीबी बोलेंगे। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या क्या टेस्ट करते हैं। अगर सीबीनेट या स्मीयर या कल्चर कोई भी पॉजिटिव है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट से, जैसे समझिए कोई लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड से हमने कोई भी एफएनएसी किया या बायोप्सी किया, उसका हम सीबीनेट किया या स्मीयर एग्जामिनेशन किया, उससे पॉजिटिव आ रहा है तो वो हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलेंगे। अगर ये नहीं करके हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, वो भी टीबी जैसा बता रहा है तो वो हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कह सकते हैं। या फिर कोई चेस्ट एक्सरे किया जिसमें हम चेस्ट एक्सरे में कुछ भी फाइंडिंग्स आ रहा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी प्रिजम्पटिव केस में, वो एक्सरे अगर रेलिवेंट है तो भी हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कह सकते हैं। तो ये जो मेन एल्गोरिदम है, स्क्रीनिंग से, फिर क्लिनिकल इवेल्युएशन से, फिर रेडियोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से ये कंफर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So the previous one was the diagnostic algorithm, and this is the diagnostic algorithm and treatment initiation. So after the CVNet results, we have after we have got the CVNet results, if it is MTB not detected, so we can look for other differential diagnosis. But if it is MTB detected and rifampicin is sensitive, so we have to look for, is it a new TB case or it is a previously TB case, treated TB case. If it is a new TB case and there is no history of previous treatment within 1 month, or if it is a previously treated case of TB with history of previous treatment more than 1 month, in both the case we have to initiate the anti-tubercular treatment, that is ATT.
And the third one is, if it is MTB detected and rifampicin resistant, then it can also be a new patient or previously treated patient. If it is a new patient, then you have to refer to the drug resistant TB center. But if it is a previously treated TB case, then we have to once again repeat the CBNet to confirm it more. So in the repeat confirmatory CBNet, if it is RIF resistant, then we have to refer to the drug resistant center, and if it is RIF sensitive, then we have to treat as a first line ATT. सो पहले जैसे हमने देखा वो था टीबी का डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम, लेकिन ये है टीबी का डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम के बाद हम जो ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं। तो हमने पहले में देखा कि इधर सिम्टम स्क्रीन करने के बाद, क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद, आइदर माइक्रोबायोलॉजिकली जो सीबी नेट से पॉजिटिव हो सकता है, सीबी नेट से नेगेटिव हो सकता है, या फिर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक भी होता है। तो इधर हम देख रहे हैं कि अगर सीबीनेट रिजल्ट के, अगर हम सिर्फ सीबीनेट रिजल्ट देखते हैं तो उसमें अगर सीबीनेट रिजल्ट में क्या क्या चीज आ सकता है, एक तो नॉट डिटेक्टेड आ सकता है, या फिर डिटेक्टेड है लेकिन रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है, या फिर डिटेक्टेड है एंड रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है। अगर नॉट डिटेक्टेड है तो हमें दूसरा डायग्नोसिस देखना पड़ेगा। अगर डिटेक्टेड है एंड रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है तो बोथ न्यू केस में एंड प्रीवियसली ट्रीटेड केस में हमें एटीटी चालू करना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें ट्रीटमेंट में। एंड अगर एमटीबी डिटेक्टेड है एंड रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है, अगर न्यू पेशेंट है, तो हम उसको ट्रीटमेंट चालू करने के लिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सेंटर भेजेंगे। लेकिन अगर प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट है तो हमें और एक बार सीबीनेट को रिपीट करना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन के लिए। उसमें अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट आता है तो हम ड्रग रेजिस्टेंट सेंटर भेजेंगे, तो उसमें हम फिर लिक्विड कल्चर, लाइन प्रोब ऐसे ये सब करेंगे। और अगर रिफाम्पिसिन सेंसिटिव आता है तो फिर हम फिर से वही नॉर्मल फर्स्ट लाइन एटीटी से उसको ट्रीट करेंगे। So here are the clinical manifestations in children living with HIV in pulmonary TB versus extrapulmonary TB. So what are the clinical features of pulmonary TB? So there should be fever, cough, failure to thrive, or weight loss. And what is the weight loss? That is more than 5% body weight as compared to the highest weight recorded in last 3 months. So the more than 5% body weight loss should be there. And or there can be poor weight gain, that is no weight gain in the past 3 months. So either there can be weight loss of more than 5%, or there can be no weight gain in the past 3 months. And there should be a contact with a TB case, the contact person with any form of active TB within last 2 years. So 2 years is the limit which we are considering to label it as a contact with a TB case or not. So if there is a contact within 2 years with any form of active TB, then we are telling it as a contact positive. And what are the clinical features of extrapulmonary TB? There can be lymph node enlargement, there can be headache or confusion in the CNS TB, there can be backache, joint pain, or spinal deformity like in the bone TB, there can be chest pain, tightness in the chest, respiratory distress like in the pleural or pericardial TB, there can be abdominal pain, swelling, discomfort, and respiratory distress like in the abdominal and peritoneal TB, or there can be TB, contact with a TB case. So इधर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देख रहे हैं इन चिल्ड्रन लिविंग विद HIV? सो पाल्मोनरी केस में अलग क्लिनिकल फीचर होता है, एक्स्ट्रा पाल्मोनरी केस में अलग क्लिनिकल फीचर होता है। पाल्मोनरी केस में मेनली क्या होता है, फीवर होगा, कफ होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, एंड वेट लॉस होगा और पुअर वेट गेन होगा। मतलब लास्ट 3 महीने में जो हाईएस्ट वेट रिकॉर्ड हुआ है उससे 5% वेट लॉस होगा, या फिर 3 मंथ से कोई भी वेट गेन नहीं होगा, सेमी वेट बच्चों में रहेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी टीबी हो सकता है, या फिर कोई भी 2 साल के अंदर कोई भी एक्टिव टीबी केस से अगर कांटेक्ट होता है तो उसको भी हम कांटेक्ट पॉजिटिव कहेंगे, और वो भी पल्मोनरी टीबी के क्लिनिकल फीचर में आ सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या क्लिनिकल फीचर होता है? तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर होगा। जैसे अगर लिम्फ नोड एनलार्ज हो रहा है तो
लिम्फ नोड टीबी कहेंगे। अगर हेडेक, कॉन्फ्यूजन या फिर सेंसोरियम बिगड़ रहा है तो हम उसको सीएनएस या ब्रेन टीबी कह सकते हैं। अगर बैक एक हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है या फिर कोई स्पाइन का डिफॉर्मिटी हो रहा है तो उसको हम बोन टीबी कह सकते हैं। अगर कोई चेस्ट पेन, चेस्ट टाइट लग रहा है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको हम प्लूरा या पेरिकार्डियल टीबी कह सकते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है या स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो हम उसको एब्डोमिनल या पेरिटोनियल टीबी कह सकते हैं। या फिर अगर कोई टीबी जैसे पल्मोनरी टीबी के केस में था वैसे भी सेम, अगर कोई 2 साल के अंदर कोई एक्टिव टीबी के कॉन्टैक्ट में कोई है तो उसको भी हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के क्लिनिकल फीचर में बोल सकते हैं। So, what are the recommendation of antiretroviral therapy with anti-tubercular treatment? So, the below are the recommendation that all this page is very important. So, all children living with HIV diagnosed with active TB are to be initiated on ART after initiation of TB treatment regardless of the CD4 count as per NTP guidelines. So what it is telling that according to NTP guidelines, you have to start the anti-tubercular. After starting the anti-tubercular treatment, then you have to start the antiretroviral treatment regardless of the CD4 count. So, and next is the start ATT fast, initiate ART as soon as TB treatment is tolerated within 2 weeks, except when signs and symptoms of meningitis are present. So, after how much time you will start the ART? That is within 2 weeks, except CNS TB, you have to start the ART. So, first you will start the ATT, and within 2 weeks, you have to start the ART, except CNS TB. So in the next, what it is telling, it is in the children living with HIV with TB meningitis, ART should be delayed for at least 4 weeks and initiated within 8 weeks after treatment of TB meningitis is initiated. So what it is telling? It is telling that first you have to start the treatment for TB meningitis according to NTP guidelines. Then after 4 weeks and within 8 weeks, you have to start the ART. Okay. And after that, the counseling, which is very important, counseling needs to be done regarding the pill burden, the drug interactions, the additive toxicities within the ATT, and TB associated immune reconstitution inflammatory syndrome, that is TB iris. So the all the counseling regarding the interaction, toxicity, the side effects, the iris, everything has to be done. सो इधर ये पेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इधर हमको क्या गाइडलाइंस है, हम अगर अगर ART और ATT दोनों ही चालू करना है शुरू से ही, तो हमें क्या गाइडलाइंस इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो भी बच्चा HIV पॉजिटिव है और साथ ही साथ TB भी पॉजिटिव है, मतलब एक्टिव TB है, तो उसको हम पहले एंटी TB ट्रीटमेंट चालू करेंगे और उसके 2 वीक के अंदर हम उसको एंटी रेट्रोवायरल मतलब एंटी HIV ट्रीटमेंट चालू करेंगे, एक्सेप्ट CNS TB छोड़ के हम 2 वीक्स के अंदर उसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू करेंगे एंटी TB चालू करने के बाद। एंड अगर CNS TB है, मतलब अगर मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो हम पहले एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उसका 4 वीक्स के बाद और 8 वीक्स के अंदर हम उसको ART चालू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चालू करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ेगा कि ये जो सब ड्रग हम चालू कर रहे हैं उसका एक दूसरे के साथ क्या रिएक्शन होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है, और टीबी की वजह से एक इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, जो आइरिस बोलते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है जो पहले डिजीज था वो लगता है कि और ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर पहले कुछ ज़्यादा साइन सिम्टम नहीं था वो अचानक से नया आ गया है, तो इसको हम आइरिस कहते हैं कि तो ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमें पहले से ही काउंसिल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है जो पेरेंट्स होता है वो ये साइड इफेक्ट देख के कभी कभी ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं।
So what are the ART drug regimen for children living with HIV during co-treatment of drug-sensitive TB? So it is also an important page. So you all have to know. So what are the treatment that we are giving in children living with HIV along with co-infection with drug-resistant TB. So here the age and weight wise categorization is there. So if the weight is less than 20 kg or if the age is less than 6 years, so mainly we are giving the fixed dose combination of abacavir and lamivudine. Along with it, there is a lopinavir and ritonavir. This is the ART. Uh, uh, Along with that, because there is a TB co-infection, we have to, and there is a rifampicin is also there in the anti-tubercular drug. So we have to super boost the ritonavir by increasing the dose of the ritonavir, and it is a twice daily base as per weight band. So once again, I want to repeat that if the age is less than 6 year or the weight is less than 20 kg, we are giving fixed dose combination of abacavir and lamivudine in the BD dosing as per the weight band. Along with that, the lopinavir, ritonavir, what we are giving originally, we have to super boost the ritonavir by increasing the dose, and we have to give this also as a BD dose as per weight band. So in the normal, the lopinavir, ritonavir in the weight band, it is 4:1 ratio, but with super boosting with ritonavir, we are giving it as a 1:1 ratio according to the weight band, that is twice daily. Next is the weight between 20 to 30 kg and age between 6 to 10 years. Here we are giving the fixed dose combination of abacavir and lamivudine twice daily as per weight band, and we are also giving dolutegravir, that is 50 mg twice daily. So we are increasing the dose of dolutegravir. And in the age between above, means in the weight above 30 kg and the age above 10 years, we are giving fixed dose combination of tenofovir, lamivudine and dolutegravir. Along with that, an additional dose of 50 mg after 12 hours. So all the things we are doing because there can be some interaction between the rifampicin, which is there in the anti-tubercular treatment, and the other drugs which are there in the antiretroviral treatment. So all the things we are doing because rifampicin is having a enzyme inducing effect. So to overcome the effect, we are just increasing the dose of some of the drugs. And the important thing that we have to also keep in mind is that the dolutegravir dose will remain twice daily for 2 weeks after stopping the rifampicin containing anti-TB treatment. So it is an important thing. We have to stop this twice dose, that is the increased dose. We have to stop it after 2 weeks only, not along with the stoppage of anti-TB drug. After stopping the anti-tuberculosis treatment, we have to continue more for 2 weeks. After that only we can stop the dolutegravir. Same as like in the super boosting of lopinavir with ritonavir also. Here also we have to continue it for 2 weeks after stopping the rifampicin containing anti-tubercular treatment. सो ये पेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें हम जो ART रेजिमेन है वो हम देख रहे हैं. जो अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ हम चालू करते हैं तो कैसा चेंज होता है ART रेजिमेन में. तो नॉर्मल जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन रह रहा था उसके साथ हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में जो रिफाम्पिसिन होता है उसका कुछ एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है. तो वो जो ड्रग को थोड़ा एंजाइम इंड्यूस करके जिसका इफेक्ट को घटा देता है, तो उसके वजह से हमें कुछ ड्रग को नॉर्मल से ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा. तो उसका रेजिमेंट क्या है? अगर लेस देन 20 kg है और एज लेस देन 6 ईयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि
जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एवाकाविर एंड लैमिबुडिन था दिन में 2 बार, उसके साथ जो लोपिनाविर एंड रिटोनाविर था उसको हमको सुपर बूस्ट करना पड़ेगा रिटोनाविर से। मतलब जो 4:1 रेशियो में ड्रग था उसका रिटोनाविर को हम बढ़ा के उसको 1:1 रेशियो में करना पड़ेगा, जो हम डेली 2 बार देना पड़ेगा। अगर वेट 20 to 30 kg है एंड एज 6 to 10 ईयर्स है तो उसमें हमारा क्या है, लोपिनाविर रिटोनाविर नहीं रहता है, उसमें हम डोल्टोग्राविर रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन था एवाकाविर लैमिबुडिन ट्वाइस डेली उसको हम देंगे, उसके साथ डोल्टोग्राविर 50 mg हम ट्वाइस डेली देंगे, जो डोज को थोड़ा बढ़ा के हम ट्वाइस डेली करेंगे। और एज अगर मोर देन 30 के वेट अगर मोर देन 30 kg एंड एज 10 साल से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन था टेनोफोविर लैमिबुडिन डोल्टोग्राविर का, तो उसको हम वंस ए डे जैसे नॉर्मल था वो हम करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, डोल्टोग्राविर को 50 mg एक्स्ट्रा देंगे 12 घंटा बाद। तो मेनली हम जो देख रहे हैं कि आइदर हम डोल्टोग्राविर का डोज को बढ़ा रहे हैं या फिर रिटोनाविर का डोज को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम रिफाम्पिसिन का जो एंजाइम इंड्यूसिंग इफेक्ट है उसको हम नॉर्मलाइज कर सके। और बाकी हम ये भी क्या नोट करना पड़ेगा, हम कब ये जो एक्स्ट्रा डोज जो हम दे रहे हैं कब हम बंद कर सकते हैं, ये हम रिफाम्पिसिन बंद करने के बाद, मतलब एंटी टीबी ट्रीटमेंट बंद करने के 2 वीक बाद ही हम जो एक्स्ट्रा डोज है डोल्टोग्राविर का वो हम बंद करेंगे। और सेम लोपिनाविर रिटोनाविर का जो सुपर बूस्टिंग रिटोनाविर हम दे रहे थे वो भी हम 2 वीक्स के बाद ही बंद करेंगे, रिफाम्पिसिन बंद करने के बाद। सो जो हम पहले जो हम देख रहे थे ये था कि अगर सो प्रीवियसली व्हाट वी हैव सीन, इफ वी आर स्टार्टिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड ATT drug, so what are the changes we are doing from the first day. But in this slide we are seeing that if the TB is diagnosed in a child living with HIV already receiving ART, means here ART has, here the child has already been receiving ART, the child is already on ART, and after few days or few months we are diagnosing TB in this child. So it is a different scenario. Previous one was the in the first day only we are getting diagnosing TB, and then we are starting the anti-tubercular drug. After that we are starting the antiretroviral drug. So that is the other scenario, and in this we are seeing that the child is already been started and receiving ART, and after that we are diagnosing TB in that child. So what are the things we have to keep in mind? So who are already on ART at the time of TB diagnosis, ART modification need to be done to maintain optimal efficacy of ATT as well as ART. When on ART presents with active TB, there is a possibility of failure of treatment. So, the TB, if the TB occurs less than 6 months of the initiation of ART, it is not the failure of treatment. The ART should be adjusted with rifampicin containing regimens. If TB develops more than 6 months of initiation of ART, the decision of ART failure should be based on CD4 count and viral load data. And if the pulmonary TB after 6 months of ART without other clinical and immunological evidence of disease progression should not be regarded as ART failure, and the extra pulmonary TB should be indicative of ART failure, although simple lymph node TB or uncomplicated pleural disease may be less significant than disseminated TB, and close monitoring is needed and adherent support should be reinforced. तो इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा पहला केस से कैसा अलग है। पहला केस में था कि हम जब HIV डायग्नोस किए थे उसके साथ साथ ही टीबी को डायग्नोसिस किए थे, तो हम पहले टीबी का ड्रग चालू किए थे फिर HIV का ड्रग चालू किए थे, तो उसमें हम पहले से ही चेंज कर दिए थे। लेकिन इधर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर इधर बच्चा HIV का ट्रीटमेंट पहले से मिल रहा था, बाद में हम इसमें टीबी का डायग्नोसिस किया, तो हम जब टीबी का डायग्नोसिस करेंगे, जब ATT चालू करेंगे, तब हमें उसके साथ साथ क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि कोई इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो ड्रग में।
तो उसमें हम हमारा दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर एआरटी चालू करने के 6 मंथ के अंदर ही टीबी होता है तो हम उसको फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर टीबी 6 मंथ के बाद हो रहा है एआरटी चालू करने के बाद, तो CD4 काउंट एंड वायरल लोड डाटा देखने के साथ हम उसको एआरटी फेल्योर बोल भी सकते हैं। वो डिसीजन CD4 काउंट एंड वायरल लोड देख के ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर 6 मंथ के अंदर हो रहा है तो वो एआरटी फेल्योर नहीं है, 6 मंथ के बाद टीबी हो रहा है तो एआरटी फेल्योर बोल सकता है CD4 काउंट एंड वायरल लोड देखने के बाद। एंड ये दोनों केस में ही हमें, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में रिफाम्पिसिन है, तो सेम तरीके से एआरटी जो ट्रीटमेंट हम बच्चे को मिल रहा था उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम देखें कि आइदर रिटोनोविर से सुपर बूस्ट करना पड़ेगा या फिर डोल्टोग्राफी का डोज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें अगर सिंपल लिम्फ नोड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल डिजीज या ज़्यादा बड़ा लिम्फ नोड या डिसेमिनेटेड टीबी जैसा नहीं है, तो हम उसको एआरटी फेल्योर नहीं भी कह सकते हैं। सिंपल लिम्फ नोड को हम नॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं, वो एआरटी फेल्योर जनरली नहीं होता है। और सभी केस में हमको बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एंड एडहेरेंस को देखना पड़ेगा कि ठीक से सब कुछ ड्रग ले रहा है कि नहीं। So here are the different pictures of HIV and TB. So the first picture we are seeing that the child is very much emaciated. There is severe weight loss. There is thinning of means there is a malnutrition picture. So this is indicating that there might be a TB co-infection with HIV. In the next picture, the child is having enlarged lymph nodes that is clinically looking like, but by examination it may look like matted lymph nodes, so it is also suggestive of a TB in HIV. Then the next picture is showing cervical lymph node. The X-ray is showing miliary pattern, so it might be a miliary TB. The CT scan is showing the enlarged lymph node. There is a paratracheal and parahilar lymph node enlargement is there. So ये स्लाइड में हमको HIV और TB का जो क्लिनिकल पिक्चर हो सकता है वो देखने को मिल रहा है। आइदर जो पहला केस में है सीवियर वेट लॉस है, सेकेंड केस में लिम्फ नोड एनलार्ज हुआ है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, थर्ड केस में सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, फोर्थ एक्सरे में मिलियरी टीबी का पिक्चर जैसा है एंड सीटी स्कैन में भी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिख रहा है। So this is also an X-ray showing there is a tracheal and parahilar lymph node enlargement. But so it is a only lymph node disease. There is no airway compression, there is no parenchymal involvement, and there is no obstruction or collapse. So we can label it as a primary TB. Now in this X-ray we can see there is a paratracheal lymph node, that is the first arrow. Then there is a parenchymal involvement. Then that is the middle lobe of the middle zone of the right lung. There is a parenchymal involvement, so we can label it as a primary complex. That is a Ghon's complex. So Ghon's complex comprises of a lymph node and the draining parenchyma. So in this X-ray, we are seeing that the primary disease, that is the lymph node, which is paratracheal and parahilar, are enlarging and compressing the airway, and along with that there is a hyperinflation of the right lower lobe, but there is no collapse. So in the bronchoscopy also we can see that the right main bronchus is collapsed. So we can label it as a progressive primary TB. That is the primary TB which was there, it is progressing. So progressive primary TB. So in this picture of X-ray also we can see the similar picture of the left parahilar lymph node enlargement, and there is a right parenchymal involvement. So it is a primary TB. In this picture also there is a right
paratracheal parahilar lymph node enlargement. Along with that, there is a right middle and lower zone lung involvement. So this is a primary complex. Here we can also see the similar picture of the right hilar lymphadenopathy. Along with that, there is a sharp border is there, so it is also showing the collapse along with consolidation. So in this X-ray, we can see the fine millet-like pattern in both the right and left lung. So it is probably showing miliary tuberculosis. So this is a case study one with age 4 months, 16 days old child complaining of fever, respiratory distress. Father has a father was TB positive, that is history of contact positive, no improvement with antibiotics. So this is most probably a HIV and TB co-infections. This is also showing the miliary pattern of the TB in the both the left and lower right lung. This is a CT scan picture of miliary TB where the millet-like pattern is seen in both the lungs. So it is also showing the mediastinal lymph node enlargement, that is in the left sided mediastinal lymph node enlargement. It is also showing the pulmonary TB. In this picture, there is a progression of the TB. Like initially, there was a right-sided parenchymal involvement, but now in the X-ray picture, we are seeing that it has led to a cavitation. So it is a progressive primary TB. Here also we can see there is a cavitary lesion in the right upper zone, and in the next X-ray there is a cavitary lesion in the middle zone. So it is also a progressive primary TB. So there is a cavitation with consolidation. So in this child we can see that there is a soft swelling, means fluctuant swelling in the back of the child, and most probably it is a cold abscess. And in the X-ray we can see there is a homogeneous opacity in the left side, and most probably it is showing the left sided pleural effusions. So the soft swelling, it is showing the that is showing the extrapulmonary TB, and the X-ray is showing there is a pleural effusion, that is also extrapulmonary TB, serous involvement. So so in this case we can see that the child, this is a case 4 of known HIV TB patient which was on antiretroviral therapy, and after 2 weeks of anti-TB treatment the child was presenting with fever, loss of appetite and dyspnea. So we can see the change in the X-ray 4 weeks after starting ART. So we can see that the lesion has progressed, and there is pericardial effusion, and the pleural effusion is also there, and enlargement of the lesion. So it is most probably it is immune reconstitution syndrome, that is the iris, that is the hyper reaction of the immune system to after starting the antiretroviral therapy. So these are few slides showing the treatment protocol of extrapulmonary TB. Like in pleural TB, when do you suspect? If there is a fever, chest pain, cough, breathlessness, anorexia, and on examination there is dullness to percussion, there is absent breath sound, and if the chest X-ray is showing pleural effusion, if the sputum for CBNAT is positive, if the USG is also showing the uh, pleural effusion, if the pleural fluid analysis is showing the suggestive of exudative fluid, then we can label it as a pleural TB. So इसमें ये कुछ स्लाइड में, सो ये कुछ स्लाइड में हम
प्लूरल टीबी कैसे डायग्नोसिस करेंगे एंड सस्पेक्ट करेंगे देख रहे हैं। अगर हिस्ट्री में हमको फीवर, चेस्ट पेन, कफ मिल रहा है, एग्जामिनेशन में डलनेस मिल रहा है, और एक्सरे में हमको जैसे मैंने पहले बताया कि प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल रहा है, या स्पूटम में सीबीनेट या स्पूटम का एंटी एएफबी या सीबीनेट पॉजिटिव हो रहा है, या फिर प्लूरल फ्लूइड में कभी कभी जो सेल काउंट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज ये सब है वो एक्सुडेटिव या टीबी जैसा वो बता रहा है, या फिर सीटी स्कैन में जैसे हमको मिलियरी टीबी देखने को मिल रहा था वैसा अगर हमको देखने को मिल रहा है तो हम उसको प्लूरल टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे here just like here we can see the x-ray showing right sided pleural effusion, there is obliteration of costophrenic and cardiophrenic angle, so it is showing the pleural TB। तो ये एक्सरे में हमको मेनली प्लूरल टीबी देखने को मिल रहा है जो राइट साइड में मोस्टली जो कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल है वो ऑब्लिटरेट हो गया है और पूरा प्लूरा में पानी भरा हुआ है, तो ये राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है मोस्टली ड्यू टू pleural TB। So this is showing the pericardial TB. So here we can see in the X-ray the pericardial chambers are enlarged. The heart is appearing big. So most probably this is a pericardial effusion with pericardial TB in child living with HIV। तो ये एक्सरे में हमको पेरिकार्डियल डिजीज मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल रहा है, जो जहाँ में जो पेरिकार्डियल चेम्बर है हार्ट के बाहर जो कवरिंग है उसके अंदर पानी भर गया है, उसके वजह से हार्ट का जो साइज है वो बड़ा दिख रहा है, तो मोस्टली ये पेरिकार्डियल टीबी है। So pleura and pericardial TB, after pleura and pericardial TB we are seeing the pericardial lymph node TB। So when do we suspect it is a pericardial we are seeing the pediatric lymph node TB। So when do we suspect pediatric lymph node TB? When there is a when there is a lymph node of more than 2 weeks, enlargement of lymph node of more than 2 weeks in more than one area like cervical, axillary and inguinal region of more than 2 centimeter size, and matted lymph node with or without any associated symptom like fever, cough, cold, weight loss, and there is no history of recent local infection, then we can suspect that it can be a pediatric lymph node TB। So investigation what we can do, we can send the lymph node aspirate for CBNAT or MGIT, we can send smear for AFB, we can send cytopathology, then we can also do the chest X-ray CBC to diagnose the pediatric lymph node TB। So this is तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि कब हम लिम्फ नोड टीबी सस्पेक्ट करेंगे, अगर 2 वीक से ज़्यादा तक लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है और मेनली वो सर्वाइकल मतलब 1 से 2 ज़्यादा जगह में जैसे सर्वाइकल, एक्सिलरी और इंगुइनल रीजन में एनलार्जमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से ऊपर है, ज़्यादातर टाइम ये मैटेड मतलब चिपका हुआ रहता है, या फिर उसके साथ कोई साइनस भी रह सकता है मतलब उससे कुछ ड्रेन हो रहा है ऐसा कुछ साइनस, एंड उसके साथ जो सिस्टमिक सिम्टम है वो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है जो 4S सिम्टम्स था। तो ये सब केस में हम लिम्फ नोड टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम उसका जो एस्पिरेट है उससे हम सीबीनेट या एएफबी का सीमियर भेज सकते हैं या साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर हम उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे या सीबीसी करके भी कभी कभी देख सकते हैं। तो ये है पीडियाट्रिक लिम्फ नोड टीबी डायग्नोसिस सस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन का मेन चीज। तो so here is the diagnostic algorithm, just like I have told before, if there is a 2 centimeter or more enlargement of the lymph node, then we can do chest x-ray. If the chest x-ray it is abnormal, we can do the sputum or for gene expert or sputum smear for CBNet. If anyone is positive, we have to treat for TB, but and along with that we have to also look for matted lymph node, cold abscess or sinus. If it is positive, then we can also aspirate and send for the pass for CBNet or smear. If it is positive, then we can start the ATT. If it is negative, we can give antibiotic for
2 weeks and 1 to 2 weeks, and after that review, if it is still persisting, then we can also send the biopsy, then we can diagnose the lymph node TB. So इधर हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर लिम्फ नोड का डायमीटर है तो हम पहले चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल हुआ तो हम स्पूटम का सीबीनेट या स्मीयर कर सकते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव हुआ तो हम टीबी जैसा ट्रीट करेंगे। अगर इसके अलावा अगर हमको मैटेड लिम्फ नोड भी मिल रहा है, अगर कोल्ड एब्सेस मिल रहा है या कोई साइनस डिस्चार्जिंग साइनस जैसा मिल रहा है, तो वो उससे हम पस लेके पस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं सीबीनेट के लिए, साइट स्मीयर के लिए। उसमें अगर या फिर कल्चर भी भेज सकते हैं, उसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ट्रीट करेंगे। अगर नहीं है तो पहले एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, फिर हम बायोप्सी करके देखेंगे। ठीक है, तो मेनली हमको कोई भी अगर क्लू मिलता है, अगर चेस्ट एक्सरे से या फिर जो एस्पिरेटेड पस से या फिर बायोप्सी से, तो हम उसको टीबी जैसा ट्रीट करेंगे। अगर नहीं कोई क्लू मिल रहा है तो एंटीबायोटिक देके पहले देखेंगे, फिर से हम इवेलुएट करेंगे। So when do we suspect? So all these things are going for extrapulmonary TB. So we have seen the lymph node TB, we have seen the pleural and pericardial TB, now is the abdominal TB. So when do we suspect? If there is fever for more than 2 weeks, anorexia is present, unexplained weight loss is present, history of contact with TB with present, and along with that the clinical features of specific type of abdominal TB is present, then we can suspect it can be a pediatric abdominal TB. So what are the clinical features specific to abdominal TB? It can be peritoneal TB. The 4 types can be there. Peritoneal TB, that is abdominal pain, fever, weight loss. Lymph node TB, that is abdominal pain, fever, palpable abdominal lump. Then intestinal TB, recurrent intestinal colic, altered bowel habit, chronic diarrhea. It can be visceral TB like liver, spleen, pancreas. There can be abdominal pain, fever, then hepatosplenomegaly. सो इधर इसमें हम को देखने को मिल रहा है कि कब हम एब्डोमिनल टीबी सस्पेक्ट करेंगे। अगर फीवर मोर देन 2 वीक्स है, अगर एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, और उसके साथ अगर जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसका स्पेसिफिक सिम्टम मिल रहा है, जैसे पेरिटोनियल टीबी के लिए एब्डोमिनल पेन, फीवर, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिख रहा है, या नोडल टीबी के लिए अगर एब्डोमिनल पेन, कोई एब्डोमिनल लंप पैल्पेबल मिल रहा है, या फिर इंटेस्टिनल टीबी के लिए डायरिया, इंटेस्टिनल कोलिक, या फिर वेट लॉस या लोअर जीआई ब्लीडिंग मिल रहा है, या फिर विसरल टीबी के लिए भी एब्डोमिनल पेन, फीवर, जॉन्डिस और हेपाटोमेगली, स्प्लीनोमेगली ये सब मिल रहा है, तो हम इसमें पीडियाट्रिक एब्डोमिनल टीबी सस्पेक्ट करेंगे। So this is nothing but the diagnostic algorithm that initially it was a when do we suspect. Now if we suspect, what we will do to diagnose the abdominal TB. So here we can get the USG suggestive of TB, or we can get USG normal. So if we get USG uh, uh, normal, then we can evaluate for other causes and refer to the other centers. But if we are getting USG suggestive of TB, then we can do the chest X-ray. If the chest X-ray is abnormal, then we can similarly send the sputum for gene expert, then sputum microscopy. If it is positive, then we will start the treatment. If the chest X-ray is normal but we are getting the peripheral lymph node positive, then we can send the FNSC from the sample for CBNet or MGIT. If it is positive, then we can start the treatment. If nothing is positive, if the X-ray means no peripheral nodes, chest X-ray normal, then you have to look for ascites, any intra-abdominal lymph node body, or ileocecal TB. So if any of the following is suggestive, then we have to send the sample. If it is positive, then we can start the treatment. So ये स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, मेनली अगर आप एब्डोमिनल टीबी सस्पेक्ट करते हैं तो हम कैसा डायग्नोसिस करेंगे और किस केस में हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो पहले तो हम यूएसजी करेंगे। यूएसजी अगर नॉर्मल है तो हम अदर कॉज के लिए देखेंगे। अगर यूएसजी एबनॉर्मल है तो उसमें हम 3 चीज़ कर सकते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल है तो चेस्ट एक्सरे से हम
फिर स्पूटम का जीन एक्सपर्ट ये सब भेज के हम देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अगर लिम्फ नोड कोई पॉजिटिव मिल रहा है तो उसका एफएनएसी करके उसका सैंपल भेज के पॉजिटिव देखेंगे। अगर पेरिफेरल नोड कोई भी नहीं मिल रहा है और चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है तो हमें 3 चीज़ देखना पड़ेगा कि उसमें अगर एसाइटिस है कि नहीं, लिम्फ नोड कोई इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड कोई बड़ा है कि नहीं, या फिर इलियोसिकल टीबी है कि नहीं। तो इलियोसिकल टीबी हमको सीईसीटी में देखने को मिल सकता है। लिम्फेडेनोपैथी अगर इंट्रा एब्डोमिनल है तो उससे हमको सिमिलरली एफएनएसी करके उसका सीबीनेट या एमजीट सैंपल भेजना पड़ेगा। और अगर एसआईटी पॉजिटिव है तो एसआईटी फ्लूइड के एस्पिरेट करके हमको उसका साइटोलॉजी प्रोटीन शुगर भेजना पड़ेगा। तो इसमें से कहीं से भी अगर हमको क्लू मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है तो हमको ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। So this is the next case showing the enlargement of the there is a swelling near the spine and paraspinal area, so it is mostly a spinal TB. So this is the boy, this is the x-ray showing the spinal TB. So we can also send sample from the similar region, and we can also do chest x-ray. If we get any sample positive, then we can start the ATT along with ART. So this is the picture showing the bone TB in the ankle region. So this is the CT scan showing CNS TB. So what are the common neuroimaging findings in the CNS TB? If we do the CT scan, then in the CT scan we can get the basal exudates. Like in the first picture, we are seeing the hyperintense area near the basal area. It is showing the basal exudates. Then we can also get the hydrocephalus, that is the enlargement of the ventricles. Then we can also get in the third picture, we are also seeing the ring enhancing lesions which are showing the tuberculoma. And in the fourth area, we are seeing the small hyperintense area which is showing the infarct. And in the spinal area, we can also see the hyperintense area in the intervertebral disc region, in the spinal body region, vertebral body region, it is showing the port spine. सो ये स्लाइड में हमको वैरायटी ऑफ टीबीएम को देखने को मिल रहा है। तो पहला केस में हमको बेजल एक्सुडेट देखने को मिल रहा है, जो वाइट एरिया है बेजल एरिया में, दैट इज बेजल एक्सुडेट है। या फिर हमको रिंग एनहेंसिंग लीजन टाइप देखने को मिल रहा है, जो थर्ड केस है वो है ट्यूबरकुलोमा। या फिर कोई इन्फाक्ट जो है वो वाइट एरिया है, वो इन्फाक्शन है। एंड स्पाइनल केस में हमको जो वर्टिब्रल बॉडी में जो वाइट एरिया देखने को मिल रहा है वो पॉट स्पाइन है। So in this picture also we can see in the lateral view we can see the ring enhancing lesion. It is nothing but the tuberculoma. And in the next slide we can see the enlargement of the ventricles. It is showing the hydrocephalus. So ये slide में भी हमको tuberculoma and hydrocephalus देखने को मिल रहा है। So what are the considerations for concomitant ART and ATT? So just like I have previously told, that if we are starting ATT with ART, there are some drug interactions. So the main drug interaction is the rifampicin, which is a potential inducer of cytochrome P450. So it increases the metabolism of NNRTI and protease inhibitor. So and it reduces the therapeutic drug level of this drug. So if we are concomitantly starting the ART with ATT, we have to increase the dose of this protease inhibitor or NNRTI. And the next thing is that it also increases the hepatotoxicity. It also increases the incidence of adverse effect. It also increases the possibility of development of iris. Just like I have previously shown in one picture, the symptoms increases after starting the ATT, and it can also lead to intake of the high pill count, which can affect the patient's acceptance. तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम एटीटी और एआरटी दोनों एक साथ चालू करते हैं तो बहुत सारे ड्रग के बीच में इंटरेक्शन होता है। उसमें से मेन जो ड्रग है वो है रिफाम्पिसिन, जो एक एंजाइम इंड्यूसर है P450। तो वो क्या करता है, जो बाकी
जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जैसे HIV का जो ड्रग चल रहा है उसका जो काम करने का जो इफेक्ट को कम कर देता है। तो इसके लिए हम देख रहे थे कि आइदर रिटोनाविर बेस्ड रेजिमेन है तो रिटोनाविर को बढ़ाना पड़ रहा था या डोल्टुग्राविर का डोज बढ़ाना पड़ रहा था। तो इसी वजह से हमको ठीक से देखना पड़ेगा कि जो अगर हम दोनों एक साथ चालू कर रहे हैं तो कौन सा रेजिमेन फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसके वजह से हमको क्या हो सकता है कि हेपाटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, आयरिस का चांस बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा पिल भी लेना पड़ता है जिसके वजह से पेशेंट ठीक से उसका नहीं लेने के कारण से उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। So what are the key points in this session? That all children with HIV has to be screened for TB on all visits to the ART centers. The 4 symptom screening has to be done as per intensified case finding protocol. The CBNet is the preferred investigation tool for detecting TB for testing samples. Daily anti-tubercular treatment for all children living with HIV with family DOTS provider. The fixed dose combination of ATT has to be appropriately prescribed according to the weight band. Appropriate ARV drug has to be prescribed as per NACO guidelines after 2 weeks and within 2 months of ATT transfusion. So ये पूरा सेशन में जो मेन की पॉइंट्स क्या है कि जो भी चिल्ड्रन HIV सेंटर में आ रहा है तो उसको हमें टीबी के लिए स्क्रीन करना पड़ेगा हर एक विजिट में। जो भी 4 सिम्टम है स्क्रीनिंग के लिए वो हमें अच्छे से वो बच्चों में देखना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सिम्टम प्रेजेंट है तो फर्दर टेस्ट हमें करना पड़ेगा। जितना भी टेस्ट अवेलेबल है उसमें से CBNet सबसे प्रेफर्ड टेस्ट है टीबी डायग्नोसिस करने के लिए। डेली ट्रीटमेंट जो है एंटी टीबी ट्रीटमेंट वो हमें ठीक से ट्रीटमेंट प्रोवाइडर से हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो फिक्स डोज रेजिमेन है ATT का वो अकॉर्डिंग टू वेट बैंड ठीक से हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ARV का भी जो फिक्स डोज रेजिमेन है नैको गाइडलाइंस के अंदर वो भी हमें चालू करना पड़ेगा ATT ट्रीटमेंट चालू करने के 2 हफ्ते के बाद, लेकिन एंड 8 वीक्स के अंदर। So thank you very much. So any questions? Thank you, sir. There are no questions in the chat box. Participants can now unmute their mic and ask questions. Any questions from the participants? Please feel free to unmute. Mic access has been given to all. So I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Hello. Yes, sir. Tripathi, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon, madam. Madam, I have put 2 questions in the chat box. Sorry, I missed them, sir. I joined late. Can you please repeat those questions, sir? I am repeating. Yeah. First question is about current cough. So, what duration of cough should be considered as current cough? Okay, so I can see the questions. So current cough, that is generally we are taking within 2 weeks duration of cough, that is current cough, not previous cough. So duration mainly we are taking within 2 weeks of duration. And then your next question is how many anatomical site involvement necessary for diagnosis of disseminated TB. So mainly we are taking more than 2 anatomical site for diagnosing of disseminated TB. Okay, sir. Okay. Thank you. Very nice presentation. Okay. So any more question? Any more questions from the participants? So I don't think there are any questions. Okay. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude this session now. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay.